Assalamu alaikum. Hello, everyone. Welcome to Encompass, where you join to learn, grow, and thrive. Well, before I begin, I want to share a wonderful message from one of my lovely students. The message says, Teacher, please don't forget us and upload a video. Well, this heartfelt request perfectly captures the purpose of creating the channel, which is to stay connected not only with my students, but also with young people everywhere who might find value in these videos. You see, I'm a teacher by profession. My role isn't just about preparing students for exams. I strive to prepare them for life. I aim to guide them with practical advice, motivate them to become better versions of themselves, and inspire a love for learning, of course. It is my passion and my mission to instill positive values and practical life lessons. This is why I created this channel to, to empower you through inspiration and knowledge in whatever way I can. Well, today's topic is planning. And why is it important? Planning matters because time is a limited resource. It's finite. Everyone has a limited amount of time. Even a day is limited to 24 hours. But each one of us perform differently. It's because of the unique pace, challenges, or priorities, difference of priorities that we all have. I feel incredibly fortunate to draw inspiration from the guidance of Allah and the teachings of the Prophet Muhammad, peace be upon him. तो हम बात कर रहे हैं प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वक्त मुख्तसर और लिमिटेड है, महदूद है, सबको लामहदूद नहीं दिया गया, वक्त महदूद है. It's a resource that can finish. और जब हम कुरान पाक में देखते हैं सूरह वल असर, a whole surah is dedicated to the concept of time, emphasizing its importance. It teaches us that by time, let's see, surely mankind is at loss, except those who believe, do righteous deeds, encourage one another to the truth, and encourage one another to patience. So this profound message reminds us to value time, take action, support others while remaining steadfast and patient. Now, this surah gives us a formula for success. You see, it's a very short surah, but it gives a formula. It highlights how time is valuable and fleeting resource that must be utilized wisely. That is why you see Allah Ta'ala is swearing by time. He begins the surah by swearing by time, al-asr, which indicates that it's immense. It has immense significance. Time is witness to humanity's action and is something we cannot reclaim once it's lost. So every moment counts. When we look at health, health can be somewhat regained. If we see at wealth, yes, if it's lost, it can be regained. आप माल को भी दोबारा कमा सकते हैं, आप हेल्थ को भी कुछ ना कुछ वापस पा सकते हैं, लेकिन वक्त का एक लम्हा भी जब चला जाता है उसको वापस नहीं लिया जा सकता. दैट्स व्हाई टाइम इज इम्पोर्टेंट. और वक्त की अल्लाह ताला कसम खाते हैं. ही स्वेयर्स बाय टाइम. दिस शोज दैट टाइम इज इम्पोर्टेंट. और वक्त ही इस चीज का विटनेस है, जो कि सारा वक्त गुजर चुका है, वो इस चीज का विटनेस है, इस चीज का, that man is at loss. So without proper use of time, most people will be in a state of loss, not only in this world, ना सिर्फ दुनिया के कामों में लॉस पे होंगे, बल्कि
आखिरत में भी लॉस में होंगे अगर वो वक्त को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकंड लेसन हियर इज द बैलेंस बिटवीन फेथ एंड एक्शन, जिन्होंने जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया। फेथ, हैविंग स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अल्लाह एंड हिज गाइडेंस, ईमान होना, बिलीफ होना, यकीन होना, and to do righteous deeds, नेक अमल करना, utilizing time for good actions that benefit oneself and others. So there should be a balance between faith, what you have in your heart, and practically doing something, physically doing something जो कि नेक अमाल है. Helping others, encouraging truth. जो next two elements जो सूर्य वाल असर में बयान हुए हैं वो है हक बात की तलकीन करना और सब्र की तलकीन करना. सो दैट्स हेल्पिंग अदर्स. ठीक है, अपने अमाल आपने कर लिए, फेथ, नेक अमल, गुड डीड्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू हेल्प अदर्स, कि आप उनको हक की बात बताएं, उनको यू टेल देम, guide them towards truth, and you promote justice, honesty, and of course teaching of Islam, which is guidance and light. Then patience, encourage patience, patience in trials. Whenever you have any challenge and you make an effort, you require patience. उसमें सब्र आपको दरकार है किसी भी काम करने के लिए. आप वक्त निकाल रहे हैं किसी चीज के लिए, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए. आप मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको सब्र चाहिए. सो पेशेंस is required to move towards the path of success, to be consistent and persistent. Surya Balasur serves as a timeless reminder of how precious time is, and it should be spent in ways that lead to personal, spiritual, and societal growth. ना सिर्फ ये आपकी पर्सनल जिंदगी में आपको कामयाबी देगा, बल्कि आपकी रूहानी और माशरती जिंदगी जो सोसाइटी के साथ है उसमें भी आप ग्रो करेंगे. इट urges us to focus on faith, good deeds, truth and patience, ensuring we don't fall into the category of those in loss, ताकि आप उन लोगों में शुमार ना हो जो कि खसारे में हैं. इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में कहा कि इन पे फोकस रहें आपका, कि ये चारों एलिमेंट्स आपकी ज़िंदगी में क्या हैं, फेथ, यकीन और नेक अमाल और सच और हक बात की तलकीन क्या आप कर. तो we just look at our individual and collective self. Let's analyze ourselves कि हम लोग कैसे हैं इनफरादी तौर पे और इज्तमाही तौर पर. A person without commitment has no faith. This highlights the importance of meeting the expectations, responsibilities we take on, whether as a student or professional. बेशक हम किसी प्रोफेशन में हैं या हम स्टूडेंट्स हैं, whatever the expectation of the institution we are connected with, we should try to come up to the expectation. जो हमारी उसमें ड्यूटीज हैं उसको हम एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकें. And if we are a student, we have our deadlines, assignments, homework, whatever. And when we take up any task, we should try to complete it in a better way. So this highlights the importance of meeting expectations and responsibilities we take on, whether as students or professionals. A person with faith strives to excel and fulfill their commitment. But how do we achieve this within the limited time we have? कभी हमारी कुछ प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, कभी कुछ, लेकिन जब आप कमिटमेंट कर लें, then make sure you just hold yourself by your collar, hold yourself by the collar and make yourself do it. So the answer lies in effective planning. You can only achieve a lot with good planning. But how can we plan effectively? Let's see. Well, first of all, visualize your goals. Whatever goals you have to achieve. For example, if there are assignments, just make a timetable that these are the deadlines and I have to finish
these assignments before this time. अपने goals बनाएं, define your goals. And if you're a student and you have um, yet to decide for your career, then just visualize your goal. अगर आप अपने आप को visualize ही नहीं कर सकते कि आप after 5 years where will you be standing, तो फिर आप उसको achieve कैसे करेंगे? First of all, you have to visualize and say to yourself that yes, this is what I want. So clearly define your goals. Start by identifying them, visualize them, write them down, and reflect on them. This clarity helps you stay focused. जब आप एक दफा लिख लेंगे उसको और उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर आप खुद ही फोकस आपका आ जाएगा. Break down your goals and yes, divide larger goals into smaller. For example, if it's a 5-term, long-term goal, divided, okay, how much will I accomplish within a month, a week, or every day? How closer am I getting to my goals? और उसको analyze करते रहें, reflect करते रहें. Yes, and action plan. Create a step-by-step plan outlining the action you'll take to achieve those goals. Time management. Prioritize and thrive. Schedule. Allocate dedicated time for work, personal pursuits, and leisure activities. आपके पास free time भी होना चाहिए. आपकी personal कुछ pursuits होती हैं इंसान की, hobbies, recreations, और कुछ वक्त के लिए काम. If you allocate properly, schedule बनाएंगे, so it wouldn't create a fuss later. और आप ऐसी पैनिक नहीं करेंगे, बिला वजह की एंजाइटी में नहीं पड़ेंगे. Prioritize task. This is important. Not all tasks are equal. So we have to distinguish between tasks which are urgent, important, or less important. I will make a video on this. So focus on high impact tasks and delegate or postpone less important ones. Eliminate distractions, very important. Create a focused work environment, minimize interruptions. These are the times when we can be distracted very easily. तो distractions से दूर रहें, और ये distractions से आप दूर इसी तरह रह सकते हैं if you have a better plan. You see, if we do not have a plan and we get up in the morning, then the lazier part of us dominates and we just sit and scroll. So to overcome this situation, we need to plan what we want to achieve. So each one of us, I know, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि every student wants to pass, wants to succeed, wants to get higher grades, लेकिन उनको सिर्फ ये पता नहीं होता कि कैसे करना है और क्या क्या बीच में hurdles आ रहे हैं. Once, if each student gets to learn from so many teachers, but if just any one of them could just teach them how to plan and what to do and what not to do. So education is not just the giving of knowledge or just giving of information. It's actually educating the child and making him dependent on himself. Student autonomy, that's the term that we use in the ELT world. Student autonomy, that we make the student autonomous, that how they can learn and do themselves, just like we give presentations to the children to prepare it themselves. That is how they become independent learners. So eliminating distractions, yes, I got just distracted by what I wanted to say. Let's focus on what's here. So plan and execute, be conscious and grateful.
Time expands in a sense when we use it wisely. Be conscious of how you'd spend each hour. Ask yourself, what am I going to achieve in this hour? When you have a clear schedule, you can accomplish much more than expected. Additionally, be thankful for the blessings you have and make the best use of resource Allah has given you. हम सुबह उठते ही क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नशूर। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें जिंदगी दी बात इसके कि हमें मौत आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं हर लम्हे के लिए। एवरी डे इज अ न्यू डे। आपको एक नया पेज, एक बिल्कुल क्लियर पेज दिया जाता है जिंदगी का कि लिखो इसके ऊपर। सारी रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, आप उनको इस्तेमाल करें। आपको वक्त मिल रहा है जो कि सबसे बड़ा रिसोर्स है। कहा जाता है कि ऑन द डेथ बेड, क्वीन ऑन हर डेथ बेड सेड, टेक ऑल माई वेल्थ एंड गिव मी जस्ट वन मोमेंट बैक ऑफ माई लाइफ। तो वो एक लम्हा भी वापस नहीं आता। Okay, so why am I showing you this wardrobe? By planning wisely and staying committed, we can make the best use of limited resource. So planning helps us achieve our goals and also keeps us calm and focused. So why am I showing you this picture? इस picture से क्या ताल्लुक है calm रहने का, focused रहने का? Well, it's because you see all the things are organized, right? So, a well organized plan reduces stress and creates space to handle unexpected challenges. Just think of it like organizing a wardrobe. If you fold and arrange clothes neatly, you keep things properly, you can fit much more into the space. Similarly, organizing, you see, when the wardrobe or things are not organized, there is too much of stress. So things can be achieved. Much or many things can be achieved. Organizing time will allow you to accomplish more without feeling overwhelmed. फिर आप स्ट्रेस या बिला वजह की एंजाइटी में नहीं जाएंगे जब आपने चीजें तरतीब दी हुई होंगी अपनी। Self-care nourish mind, body, spirit. Very important. Do not neglect your physical health, mental well-being, spiritual connection. All these are important. Man is a complex being. बहुत सिंपल इंसान की जिंदगी नहीं होती। इंसान एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है जिसकी इमोशनल नीड्स हैं, स्पिरिचुअल नीड्स हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं। तो इसलिए आपको अपनी नीड्स का ख्याल रखना है। फिजिकली यू शुड properly eat, get proper sleep, sufficient sleep, do exercise, do not just sit around all the time. Mental well being, engage in activities that bring joy and seek support when needed. Apne jo, yes, you do play sports, yeah, jo bhi recreation you feel good in. Some people like painting, some like drawing, or some even like cooking. So जो भी आपकी पसंद की चीज है, जो हॉबी है, यू डू टेक टाइम फॉर इट। लेकिन ये देखें कि ऐसी कोई चीज ना हो जो आपकी मेंटल वेल बीइंग को बहुत ज्यादा खराब करे। फॉर एग्जांपल, watching too much of social media or movies or all those things. So be mindful कि आपकी जो चीज आपको फायदा दे रही है, इट अलाइंस विद योर एम, उस चीज को अपनी हॉबी में ही इनकॉर्पोरेट कर लें तो आपको फायदा होगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन, फॉर एग्जाम्पल, let me tell you, for example, if I want to, I'm doing a course, for example, so all my hobbies would be related to what I want to do in that course. For example, if I have free time, I'll be watching
videos or listening to any podcast or anything related to that topic, noting down, maybe writing it down, maybe discussing with a friend or making a video out of it. तो कुछ ना कुछ उससे related या time management. I love to watch videos of self-improvement, to read books on self-improvement, time management. So, I keep myself immersed in such things which will benefit me in the long run. क्योंकि देखिए आप मूवीज ड्रामास देख तो लेते हैं, वो वक्त ही एक तरह से आपको थोड़ा सा खुशी देती है, एंड द सेकेंड मोमेंट यूर स्क्रॉलिंग फॉर मोर। तो वो ऐसी चीज है जो कि आप अगर पिछले साल का सोचें कि मैंने कोई ड्रामा देखा था, वो प्लेजर यू विल नॉट गेट दैट अगेन, है ना। तो ऐसी चीज के पीछे हम क्यों ना जाएं जो कि परमानेंट है। सो बिकॉज टाइम, हमने अभी बात की कि टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्स, और ये भी एक टाइम, जैसे कहते हैं टाइम इज मनी। तो वी डू नॉट जस्ट स्पेंड मनी, ऐसे हम फेंकते नहीं है कि एक एक रुपए की चीज हम खरीदें। वी ऑल ऑफ अस आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। हम क्या करते हैं, हम ब्रांड्स लेते हैं, वी गो फॉर थिंग्स विच आर ड्यूरेबल। तो व्हाई नॉट स्पेंड आवर टाइम बाइंग थिंग्स विच विल later on help us in our life, जो हमें आगे जाके हमारी आखिरत तक हमारी संवार सके। हम ऐसी चीजों पे क्यों ना अपना वक्त लगाएं। तो इसलिए ये टाइम जो है, ये एक एक लम्हा इसका, क्योंकि वापस खरीदा नहीं जा सकता। तो इस वक्त को इतने उससे इस्तेमाल करें ख्याल से कि ये हम इससे वो वहां पे इन्वेस्ट करें कि इससे हम आखिरत भी कमा सकें। Okay, spiritual connection. Explore your values and beliefs, connect with nature, engage in activities that inspire you. Spiritual, as I said, man is complex. Spiritual connection आपका बहुत बहुत important है। इस पे एक separate video बनाऊंगी। Very important. Some things we just focus, sometimes we just focus on the physical and we just neglect our spiritual side. हमारी एक spiritual side है, that's the side which is actually giving us life. और इसको कैसे हमने, हमारे दीन में सारी वो चीजें मौजूद हैं फॉर एवरी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनकी अहादीस, उनकी दुआएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इट्स अ होलसम पैकेज। आपको सब कुछ मिल जाता है उसमें। सो नरिश योर माइंड, बॉडी, स्पिरिट। तो अपने आप को कनेक्टेड रखें दीन से। कुरान पढ़ें, अहदीस पढ़ें, दुआएं पढ़ें, अस्कार पढ़ें, और अपने वक्त से आखिरत, दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें। When you decide to embark on the journey of self-improvement, remember to embrace the power of planning. जब भी आप इरादा करें कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, so always remember that start with planning, prioritize self-care, and stay focused on your goal. As Allah says in the Quran, indeed, those who believe and do righteous deeds will have a good end. So let's plan, prioritize, and make the most of time we've been given. With that thought, let's begin the journey of making our time meaningful and productive. Thank you for watching, and I look forward to sharing more insights